गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चाइनीज़ नेशनल्स जो हैं उन्होंने जियाओ कैंग, जो कि एक उनका मॉडल है कि वो बॉर्डर्स पर विलेजेस बनाना शुरू कर देते हैं, वो उन्होंने जो है प्रोसेस शुरू कर दिया है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स के पास। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? बेसिकली एक डिमार्केशन है जो कि इंडियन कंट्रोल टेरिटरी को चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी के साथ सेपरेट करती है। सिर्फ एक कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि ये एक्चुअल बॉर्डर है। और 3 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है। याद रखो, एलएसी को दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो अभी तक कोई एग्री नहीं करी हैं इस पे। 3 सेक्टर्स पर इंडिया के हिसाब से जो है ये डिवाइड है। ईस्टर्न सेक्टर में, मिडल सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर में। ईस्टर्न सेक्टर में जो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का एरिया आता है। मिडल सेक्टर में उत्तराखंड और एचपी का एरिया आता है। और वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख का एरिया आता है। इंडिया की जो क्लेम लाइन है वो ऑफिशियल बाउंड्री है हमारे हिसाब से, जिसमें अक्साई चीन और गिलगिट बाल्टिस्तान दोनों आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलएसी जो है वो क्लेम लाइन नहीं है इंडिया की, तो इंडिया एलएसी को नहीं मानता इस मामले में। चाइना के केस में एलएसी जो है वो क्लेम लाइन है, एक्सेप्ट ईस्टर्न सेक्टर में, क्योंकि वो तो पूरा अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत मानता है। तो डिसएग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया जो है रिजेक्ट करता है एलएसी के कंसेप्ट को, जो कि चाइना, हम मानते हैं कि चाइना ने बनाया है। और ये लाइन जो है, इंडिया कहता है कि 1962 की वॉर से पहले की जो सिचुएशन थी वो ही जो है ये लाइन होनी चाहिए। अक्साई चीन जो है वो लद्दाख प्रोविंस का पार्ट होना चाहिए। ठीक है। ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो 1914 में वेल डिफाइंड थी। और वेस्टर्न जो बाउंड्री है लद्दाख की, वो वेल डिफाइंड नहीं थी। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं? चाइनीज़ नेशनल्स जो हैं वो वेकेंट डिफेंस विलेजेस को जो है वो ऑक्यूपाई करना शुरू कर चुके हैं। लोहित वैली से लेकर तवांग सेक्टर तक अरुणाचल प्रदेश के ऐसे लगभग 628 वेल ऑफ विलेजेस बना चुका है चाइना, जिनका डुअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब उनको समय पड़ने पर वो मिलिट्री यूज़ भी कर सकता है उसका। चाइना जो है कंसिस्टेंटली वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। पिछले 3-4 साल में इंडिया ने भी अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है वो इंडिया ने बनाना शुरू किए हैं, जिसमें 663 बॉर्डर विलेजेस इंडिया बनाने का प्लान कर रहा है। खासकर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के रीजन में 3 मेजर हाईवेज जो है इंडिया ने प्लान किए हैं अरुणाचल प्रदेश में। ट्रांस अरुणाचल हाईवे, फ्रंटियर हाईवे, ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्वैश किया है और स्कीम को क्वैश किया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला है कि अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो इशू नहीं कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये सेक्शन 29C(1) ऑफ आरपीए जो है उसको वायलेट करता है, और ये एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसमें जो एक प्रोविज़न है कि सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर अनलिमिटेड कॉरपोरेट फंडिंग जो है वो दी जा सकती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो भी आर्बिट्रेरी है और वो वॉलेटिव है आर्टिकल 14 को। ठीक है। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि कंपनीज जो है पहले सिर्फ तभी कंट्रीब्यूट कर सकती थी जब उनका नेट एग्रीगेट प्रॉफिट जो है बन रहा हो, लेकिन अब चाहे लॉस मेकिंग कंपनी भी हो तो भी उसको जो है वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रीब्यूट करने के लिए अलाउ जो कर दिया गया है। इससे जो है क्विड प्रो को की सिचुएशन आएगी, मतलब को जो कंपनी पॉलिटिकल डोनेशन दे रही है उसको किसी ना किसी तरह से फ़ायदा उठाया जाएगा उसका। तो अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशंस जो हैं वो इन्फ्लुएंस ऑफ कंपनीज जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में उसको बढ़ा देंगी। इसलिए जो है ये फ्री और फेयर इलेक्शंस के खिलाफ प्रिंसिपल है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या? इंटरेस्ट फ्री बेयरर बॉन्ड्स, जो कि कंपनीज और इंडिविजुअल्स इंडिया में परचेज कर सकते हैं फ्रॉम ऑथोराइज्ड ब्रांचेस ऑफ एसबीआई। ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के मल्टीपल्स में बेचे जाते हैं। और केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट जो है चाहिए होता है डोनेशंस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को। इनकी लाइफ जो है वो सिर्फ 15 दिन होती है। कोई नंबर का कैप नहीं है, कितना भी जो है परचेज़ किया जा सकता है, मतलब डोनेट भी किया जा सकता है ऑफ कोर्स फिर उसी को। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डोनेशन होती जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होती हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग ले सकती हैं? सिर्फ वही पार्टीज़ जो सेक्शन 29A ऑफ आरपीए में रजिस्टर्ड है और उन्होंने कम से कम 1% वोट्स जो है वो सिक्योर किए हैं, या तो लास्ट जनरल इलेक्शन में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में। ठीक है। और वो उसको
डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में ही जो है वो ऑथराइज्ड बैंक में के एनकैश करा सकती हैं। ये अमाउंट उनको डिस्क्लोज भी करनी होती है इलेक्शन कमीशन को। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बीमा सुगम ई मार्केट प्लेस। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो IRDAI ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल रखा है इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस के लिए, जिसका नाम होगा बीमा सुगम। तो काइंड ऑफ इसको आप कह सकते हो UPI मोमेंट बनेगा ये इंश्योरेंस के लिए, बीमा ट्रिनिटी का। ठीक है, तो बीमा ट्रिनिटी क्या है? 3 pronged स्ट्रेटजी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें हम अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी देना चाहते हैं। तो उसमें बीमा सुगम है, बीमा विस्तार है, बीमा वाहक है। बीमा सुगम क्या है? जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंश्योरेंस को जो है वो डिजिटाइज किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है। बीमा विस्तार क्या है? एक ऑल इन वन इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज देगा अफोर्डेबल प्राइस पर। बीमा वाहक कौन है? विमेन लेड फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स। तो बीमा सुगम के बारे में आज हम देखेंगे। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कस्टमर्स जो है अपनी सूटेबल स्कीम चूज़ कर सकेंगे मल्टीपल ऑप्शन से, वेरियस कंपनीज में से। तो इसी प्लेटफॉर्म पर ही सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स भी हो सकेगा, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या डेथ क्लेम्स हो, पेपरलेस मैनर में। IRDA ने एक कमेटी अपॉइंट की है कि कैसे इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया जाएगा। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? सिंगल विंडो होगा, पॉलिसी होल्डर जो है अपनी इंश्योरेंस कवरेज को मैनेज कर सकेगा। एंड टू एंड सोल्यूशंस दिए जा सकेंगे कस्टमर्स के इंश्योरेंस नीड्स से के रिलेटेड। हंड्रेड्स ऑफ इंश्योरेंस स्कीम में करंटली जो है कंज्यूमर्स फंसा हुआ है, उसे समझ नहीं आता कि कौन सा खरीदना चाहिए। तो वो इसी प्लेटफॉर्म पर जाके जो है सूटेबल स्कीम अपने लिए खरीद सकता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म से। इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो ऑथेंटिक डेटा इस पर प्रोवाइड करेंगी। इंटरफेस जो है इंटरमीडियरीज के लिए जो है प्रोवाइड किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि जो है पॉलिसीज़ जो है एजेंट्स बेच सकें पॉलिसी होल्डर्स को। पेपर वर्क रिड्यूस होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोटोकॉल जिसमें यूज़ किया जाएगा, और फिर इंश्योरेंस प्रोसेस को पूरा डेमोक्रेटाइज और यूनिवर्सलाइज किया जाएगा। तो क्या फिजिकल मोड ख़त्म हो जाएगा? कस्टमर्स जो है जब इंश्योरेंस अकाउंट खोल लेंगे, पॉलिसीज़ जो है इसके अंदर स्टोर की जाएंगी, जो है डीमैट अकाउंट की तरह, ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरह होगी, तो फिर जो है ऑफ कोर्स फिजिकल मोड की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो IRDAI क्या है? एक स्टेचुटरी बॉडी 1999 के अंदर एक्ट के अंदर बनाई गई, ओवरऑल सुपरविजन और डेवलपमेंट देखती है इंश्योरेंस सेक्टर का इंडिया में। अगर हम देखें गाइडलाइंस के बारे में, तो ये बीमा सुगम एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की तरह काम करेगी, जिसमें जैसे कि NPCI में है ना कि बहुत सारे बैंक्स ने मिलकर NPCI को बनाया है, वैसे ही लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस जो है, इंश्योरर्स जो हैं वो मिलकर इसको ओन करेंगे बीमा सुगम को। IRDAI जो है वो गवर्नेंस और ऑपरेशंस देखेगा इसकी, और रेगुलेटरी ओवरसाइट भी रखेगा ऑफ कोर्स, जैसे NPCI पे रखता है RBI। और इसका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, और कंसेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होगा ये। कंज्यूमर्स से कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे इस सर्विसेज को अवेल करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं UN वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज और एनवायरनमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस ने 7 इनिशिएटिव्स जो हैं, चाहे वो अफ्रीका से हो, लैटिन अमेरिका से हो, मेडिटेरेनियन से हो, साउथ ईस्ट एशिया से हो, उनको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स में जो है वो डाल दिया है। तो ये UN वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स जो है पार्ट है UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का, जो कि UNEP और FAO मिलकर चला रहे हैं। एम इसका ये है कि डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम को प्रिवेंट, हॉल्ट और रिवर्स किया जाए। और जो ये प्रोग्राम्स हैं इसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें मिलेगा UNEP और FAO से, और इवन UN से भी। तो नोटेबल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट दिया जाएगा ताकि ग्लोबल कमिटमेंट्स जो हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, 1 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को रिस्टोर किया जा सके। तो ये 7 इनिशिएटिव्स जो हैं यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बाल्टिक सी। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टोन एज वॉल डिस्कवर की गई है बाल्टिक सी के नीचे जर्मनी में, जिसको कहा जा रहा है कि ये ओल्डेस्ट मेगा स्ट्रक्चर है ह्यूमंस द्वारा बनाया गया यूरोप में। तो बाल्टिक सी क्या है? एक सेमी एनक्लोज्ड आइलैंड इनलैंड सी है जो कि नॉर्दर्न यूरोप में सिचुएटेड है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन की ही आर्म है, जो कि स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला को रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूरोप से जो है वो सेपरेट करती है। लगभग 8,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इस पर, जिसमें स्वीडन, पोलैंड, लिथुआनिया, लैटविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, जर्मनी, डेनमार्क और रशिया आते हैं। ये अटलांटिक ओशन को डेनिश स्टेट्स के साथ भी कनेक्ट करता है,
और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रैकिश इनलैंड वाटर बॉडी है ये। यहाँ पर जो सैलिनिटी लेवल है वो कम है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड ओशंस, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाटर आता रहता है। नीवा यहाँ की लार्जेस्ट रिवर है जो कि ड्रेन होती है बाल्टिक सी में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेक्शन 125 ऑफ आईपीसी। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो एक प्ली को एग्जामिन करेंगे कि क्या जो डाइवोर्स्ड मुस्लिम विमेन है वो मेंटेनेंस ले सकती हैं सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स दी जानी चाहिए। तो सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट क्लेम कर सकते हैं अपने स्पाउस या चिल्ड्रन से। तो कौन क्लेम कर सकता है? चाहे वो वाइफ हो जो कि अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, जो कि जिसको डाइवोर्स मिल दिया गया है, या उसको उसने डाइवोर्स मांगा है, या वो रीमैरिड नहीं करी उसने किया है। चिल्ड्रन कौन है? बिलो अ सर्टेन एज, जो कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है। पेरेंट्स कौन? जो कि फादर या मदर हो सकते हैं, जो कि सन या डॉटर उनको मेंटेनेंस देंगे। जो है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस मीट होनी चाहिए। नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ल, मतलब रिस्पोंडेंट जो है, जो क्लेम मांग रहा है, उसको निगलेक्ट किया गया या रिफ्यूज़ किया गया है फाइनेंशियल सपोर्ट। डिपेंडेंसी, मतलब क्लेमेंट जो है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, तो उसको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है। सफिशेंट मीन्स, मतलब जिससे मेंटेनेंस मांगी जा रही है उसके पास सफिशेंट मीन्स हैं अदरवाइज सपोर्ट करने के। क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड की जाती है उस पर्सन की पेइंग कैपेसिटी या इनकम देखकर। और ड्यूरेशन जो है वो मंथली बेसिस पर भी हो सकती है, वन टाइम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है वो एक प्री बिड मीटिंग कर रही है, जिसमें कि प्रोडक्शन पीएलआई स्कीम एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल से रिलेटेड जो है वो बनाई जा रही है। तो एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल क्या है? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके जो है वो डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये पीएलआई स्कीम एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स में है क्या? एक स्कीम है नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसीसीज करना चाहती है विद इन कंट्री। तो हम 50 गीगावाट आर की हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लाना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो जिसको सब्सिडी दी जाएगी वो 2 साल के अंदर अंदर ही जो है वो कमीशन हुई होनी चाहिए। सब्सिडी जो है वो 5 साल के पीरियड के अंदर धीरे धीरे डिसबर्स की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैसीनी स्पेसक्राफ्ट। इंटरनेशनल सॉरी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा के कैसीनी स्पेसक्राफ्ट का जो डेटा है उससे ये हमें पता लग रहा है कि जो सैटर्न का मून है मीमास, उसके नीचे वास्ट ओशन है आइसी सरफेस का। तो कैसीनी स्पेसक्राफ्ट जो है वो जॉइंट नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी का मिशन था सैटर्न में। 1997 में इसको लॉन्च किया गया था। फर्स्ट स्पेस ऑर्बिट था जो कि सैटर्न को ऑर्बिट किया जिसने जो है और टाइटन जो सैटर्न का लार्जेस्ट मून है वहाँ पर भी ये लैंड हुआ। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट था ये। 2004 से लेकर 2017 तक ये ऑर्बिट करता रहा सैटर्न को। इसने सैटर्न के एटमॉस्फेयर और रिंग्स को जो है वो मेजर किया। 6 मून्स जो है डिस्कवर किए सैटर्न के। उनमें से जो मीमास है स्मॉलेस्ट और इनर मोस्ट है, ये रेगुलर मून्स ऑफ सैटर्न का, आइसी और हेविली क्रेटर्ड है। इसमें गिगेंटिक क्रेटर जो है वो बहुत ही फेमस है, जाइगेंटिक क्रेटर जो है बहुत फेमस है, हर्शल। और कहा जाता है कि इसकी लो डेंसिटी है, मतलब कि ये ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ वाटर आइस से बना है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिसलर वाटर। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो मिसलर वाटर एक प्रोडक्ट होता है जो सुपरमार्केट्स, केमिस्ट या बाथरूम कैबिनेट्स में आपको देखने को मिलेगा। एज अ क्लेंजर यूज़ किया जाता है इसको, और ये स्किन केयर रूटीन में बहुत ही लोग इसको यूज़ करते हैं। मिसलर वाटर बेसिकली मिसल्स से बनता है, जिसको हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि ऑयली सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं। और ये मिसल्स में हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर होता है, मतलब कि ये बहुत ही आसानी से वाटर में मिक्स रहते हैं, और ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, खासकर मेकअप जैसे होता है जो स्किन से रिमूव करना, उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहता है। माइल्ड डिटर्जेंट भी होता है इसमें। जब इसको कॉटन के ऊपर लगाया जाता है तो इसकी हाइड्रोफिलिक वाटर कैपेसिटी जो है वो, जिसकी खुद वेट कॉटन की भी हाइड्रोफिलिक फिलिक कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। जब इसको भी लगा दिया जाता है तो ये सरफेस से स्टिक आउट करता है, और अपने ऊपर मेकअप, सनस्क्रीन, ऑयल डार्ट, किसी भी तरह की जो है ये
ऑयल जो होता है उसको, कंटेमिनेंट्स को जो है ये फेस से अट्रैक्ट करता है और इनको बाइंड कर लेता है और स्किन से रिमूव कर देता है, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is line of actual control. This topic is important for your science and tech section. So Chinese nationals have started occupying several of their model Xiaogang border defense villages across India's northeastern borders. And what is LAC? It is the demarcation which separates Indian controlled territory from Chinese controlled territory. It is just a concept. Remember this, it is not agreed upon by the two countries. As per India, it is divided into three sectors: eastern sector, which spans Arunachal Pradesh and Sikkim; middle sector, which spans Uttarakhand and Himachal Pradesh; and the western sector, which spans Ladakh. So India's claim line can be seen as the official boundary as per us, as per India, which also includes Aksai Chin and Gilgit-Baltistan. So which means that LAC is not the claim line for India. We are actually claiming Aksai Chin and Gilgit-Baltistan also. In China's case, LAC is the claim line except in the eastern sector because it is also claiming Arunachal Pradesh as South Tibet. So we have disagreements over the LAC, and India rejects the concept of LAC because it is the China created concept. This line has omitted gains from, India says that this line should omit gains that China has made from 1962 war. Aksai Chin in Ladakh province and of the princely state of J&K was not part of British India, but it was part of British Empire. So thus the eastern boundary was well defined in 1914, but the western boundary, which consists of Ladakh, it was not well defined at that time. So recent developments at the LAC have been witnessed, which we have seen that Chinese nationals have started occupying certain vacant villages, defense villages, from Lohit Valley to Tabang sector of Arunachal Pradesh. China has been constructing 628 such well-off villages, which are having dual-use infrastructure, which means that they have both civil and military purposes. And Chinese have consistently improving their infrastructure along the LAC. In the last 3 to 4 years, India is also not behind. We have also stepped up our efforts on border infrastructure. We have recently launched this Vibrant Villages program, through which we want to develop 663 border villages into modern villages with all amenities. And these villages will be in Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, and Arunachal Pradesh especially. So we also have the plans for three major highways at Arunachal Pradesh: Trans Arunachal Pradesh Highway, Frontier Highway, and East-West Industrial Corridor Highway. So the next topic is electoral bonds. This topic is important for your polity section. So uh, while declaring electoral bond scheme as unconstitutional, Supreme Court has recently directed the State Bank of India to stop issuing electoral bonds immediately. The Supreme Court has said that these electoral bond scheme is unconstitutional because it is violative of the RPA. The court has also observed that the Section 182 provision of Companies Act, which permits unlimited corporate funding to the political parties, is also arbitrary and it is violative of Article 14. The court has said that companies, before the amendment to Section 182, could only contribute a certain percentage of their net aggregate profits, but now after this amendment, companies which are also loss making, they can contribute to parties with the basic motive of quid pro quo, and it is not for the purpose of income tax benefits actually. Okay, so it would permit unlimited corporate contributions, and it would authorize unrestrained influence of companies in our electoral process, which is violative of the principle of free and fair elections and political equality. So what is the electoral bond scheme? So electoral bonds are interest-free bearer bonds or money instruments which can be purchased by companies and individuals in India from authorized branches of SBI. These bonds are sold in multiples of 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore, and they can be purchased through a KYC compliant account to make donations to a political party. They have a life of only 15 days. There is no cap on the number of electoral bonds that a person or company can purchase. Under the income tax, electoral bond donations are also tax exempt.
Okay, so who can receive the funding from electoral bonds? So only political parties who have been registered under Section 29A of RPA and they have secured not less than 1% votes either in last general election or in the Legislative Assembly elections, they are eligible to get the electoral bonds funding. They can encash them within a stipulated time only and through a designated bank account with a authorized bank, and these parties have to disclose the amount to Election Commission also. So the next topic is Bima Sugam e-marketplace. This topic is important for your economy section. So IRDAI has unveiled a draft proposal for insurance electronic marketplace called Bima Sugam. It is will be a part of Bima Trinity that the government of India is planning. So this will be a UPI movement for insurance. So Bima Trinity is basically a three-pronged strategy of central government of India through which three A's are being targeted: availability, affordability, and accessibility. So Bima Sugam is a digital portal which will integrate distributors and insurance into a single platform like UPI. Bima Vistar will be a one all-in-one insurance product which would offer comprehensive insurance coverage at affordable prices. Then there will be Bima Vahak, who will be the distribution force, women-led distribution force, who would be selling the insurance products to the consumers. So, what is Bima Sugam? So, Bima Sugam is an online platform where customers can choose a suitable scheme from multiple options given by various companies. This platform will help in the settlement of claims, whether it is health coverage or death claims, in a paperless manner on the basis of policy numbers. So, what are the steps which have been taken by IRDA? So, it has appointed a committee for the creation of this platform. So what will be the benefits of Bima Sugam? So there will be single window. This will be a single window for the policy holder, which will allow them to manage their insurance coverage. It will provide end-to-end solutions for customers' insurance needs. It will empower the consumers. Uh, Currently, there are hundreds of insurance schemes in the life and non-life sectors. Customers have no idea who is offering the best deal. So, Bima Sugam will enable them to identify a suitable scheme for the customers in a single platform. It will also facilitate insurance companies to access the validated and authenticated data from various touchpoints on a real-time basis. This platform will also serve as an interface for intermediaries and agents to sell policies and provide services to policyholders, among others, and reduce paperwork. IRDA has said that Bima Sugam is an electronic e-marketplace protocol which would universalize and democratize insurance. So, will the physical mode go away? Of course, when the customers will open an insurance account and the policies will be stored in this account digitally, they would be able to identify right policy, buy it, settle the claims, and renew it online through an online mode. The need for the physical mode would not be there. It would basically work like demat accounts through which we go for online trading. Okay, so what is IRDA? So it is a statutory body which is meant for overall supervision and development of the insurance sector in India. If we look at the proposed guidelines, then Bima Sugam will be operating as a not-for-profit company. It will be widely owned among several life, general, and health insurance. So IRDA will play a crucial role in overseeing the Bima Sugam's governance and operations. So Bima Sugam will establish a dedicated risk management committee also to identify and mitigate various risks. So this will operate on a consent-based architecture, and these consumers, like for UPI, consumers will not be charged for availing services through Bima Sugam. So the next topic is UN World Restoration's flagships. This topic is important for your international relations and your environment section also. United Nations has named seven initiatives from Africa, Latin America, Mediterranean, and Southeast Asia as the intergovernmental organization's World Restoration flagships. So what is UN World Restoration flagships? It is part of the UN Decade on Ecosystem Restoration, which is led by UNEP and FAO. Aim is to prevent, halt, and reverse the degradation of ecosystems, and the eligible projects are, of course, eligible for
The selected projects are eligible for technical and financial support from the organization also. The awards would track notable initiatives and provide support to global commitments in order to restore 1 billion hectares. So these are certain 7 initiatives which have been identified and they have been added to this World Restoration Project. So the next topic is Baltic Sea. This topic is important for your international relations. So a Stone Age wall has been discovered beneath the Baltic Sea in Germany, which is considered to be as the oldest megastructure built by humans in Europe. So Baltic Sea is a semi-enclosed inland sea located in northern Europe. It is an arm of the North Atlantic Sea, which separates the Scandinavian peninsula from the rest of continental Europe. It has a coastline of approximately 8,000 km, which includes Sweden, Poland, Lithuania, Latvia, Finland, Estonia, Germany, Denmark, and Russia. It connects the Atlantic Ocean through the Danish Straits, and it is the world's largest brackish inland water body. So the water salinity levels are lower than that of world oceans because of the inflow of fresh water from surrounding land and sea's shallowness. Neva is the largest river that drains into the Baltic Sea. So the next topic is section 125 of IPC. This topic is important for your social issues. So Supreme Court has recently decided to examine a plea whether a divorced woman, Muslim women can seek maintenance under section 125 of CRPC. So this section deals with maintenance of wives, children and parents. It is a legal provision which allows certain category of individuals to claim financial support from their spouse or children. Who can claim maintenance? Wife, children and parents. Wife is someone who is unable to maintain herself and who has been divorced or sought divorce from her spouse and has not remarried. So, children below a certain age or mentally physically disabled children can claim maintenance from their parents. Parents, both father and mother, they are entitled to be maintained equally by son and daughter. So there are certain conditions which have to be met. First of all, the person who is seeking maintenance must show that he or she has been neglected or refused or refused the financial support. Dependency, which means that claimant must establish that they are unable to maintain themselves. The person from whom maintenance is being claimed should have sufficient means to maintain the person who is claiming support. So the court determines the amount of maintenance, which is based on various factors like the income and financial capacity of the person who is liable to pay. The maintenance can be awarded on a monthly basis, and it can be a temporary or permanent arrangement also, depending on the circumstances. So the next topic is advanced chemistry cell. This topic is important for your science and tech and your economy section. So Ministry of Heavy Industries has convened a pre-bid meeting in New Delhi for the foundation of the second round of PLI scheme for advanced chemistry cells. So advanced chemistry cells can store electric energy either as electrochemical or as chemical energy and convert it back to electric energy as and when required. So what is PLI scheme for the same? So PLI scheme for advanced chemistry cells is also called the National Program on Advanced Chemistry Cell Battery Storage. It aims to promote manufacturing of technology agnostic ACCs within the country, and the aim is to set up a cumulative ACC manufacturing capacity of 50 gigawatt hours. The manufacturing facility as proposed by the beneficiary firm would have to be commissioned within a period of 2 years. The subsidy will be dispersed thereafter over a period of 5 years. So the next topic is Cassini spacecraft. This topic is important for your science and tech section. So recent finding from data collected by NASA's Cassini spacecraft has revealed the presence of vast ocean beneath the icy surface of Saturn's moon Mimas. So what is Cassini spacecraft? It is a joint NASA, European Space Agency, Italian Space Agency space mission to Saturn, which was launched in 1997. This mission consists of Cassini orbiter, which was the first space probe to orbit Saturn, ESA's Huygens probe, and it landed on Titan, which is the largest moon of Saturn. So spacecraft was one of the largest interplanetary one, and it orbited Saturn from 2004 to 2017. It measured the structure of Saturn's atmosphere and rings. It also discovered six moons of Saturn, and revealed that Enceladus and Titan as promising locations to search for extraterrestrial life also. So if we look at Mimas, it is the smallest and innermost of the major regular moons of Saturn. So the surface is icy and it is heavily cratered. The most striking feature of this small moon is the gigantic crater known as Herschel. So this moon has low density, which means that it is composed entirely of water ice.
So the next topic is micellar water. This topic is important for your science and tech section. So micellar water, which is a product found in supermarkets, chemists, and bathroom cabinets around the world, is very effective. Is a very effective cleanser, and many people use it as part of their skincare routine. So micellar water contains micelles, which means clusters of molecules, which are very effective at removing oily substances. These micelles have a hydrophilic exterior, means that they are very happy to remain mixed throughout water. It is a commonly used skin care product which helps remove impurities and makeup from our skin. So it is a very gentle solution which contains a very mild detergent. So when you apply micellar water to a cotton pad, another convenient interaction occurs. The wet cotton, which is hydrophilic, which means that it loves water, it also gets this micellar micelles. Now the micelles and the wet cotton sticks out from the surface, and there is a layer of hydrophobic tail groups which attract themselves to makeup, sunscreen, oil, or any contaminants on your face. These contaminants bind to the hydrophobic tails and they are removed from the skin. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.